फेस इज नॉट क्लियर। नाउ इट इज क्लियर। ठीक है, उल्टा हो गया, कैमरा उल्टा हो गया, सीधा कर दीजिए। हाँ हो गया। हाँ हो गया हो गया हो गया। आई होप कनेक्शन आपका सही हो, क्योंकि थोड़ा ब्लर सा आ रहा है इमेज। नो ना, लैपटॉप के आप लॉगिंग कर ही नहीं सकोगे अगर इंस्टाग्राम लाइव जाना है। यू हैव टू ओनली गो टू द मोबाइल ओनली। तो लैपटॉप के लिए अलग से सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है। तो दैट्स द रीजन आई डू नॉट ऑप्ट फॉर द डेस्कटॉप और लैपटॉप ऑल्सो। तो यही सही रहेगा आपके लिए, मेरे लिए। सो आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट यू रेणुका के हाँ, Mohit, your connection is okay. I was talking about the speakers net connections. तो रेणुका बस आपका थोड़ा Are you able to hear me? Yes, I am able to hear you. But your video connection, I think your what do you say, the image is getting blur. वो थोड़ा blur हो रहा है, बाकी तो overall अच्छा ही आ रहा है। ठीक है, तो let me introduce you about just again a few lines about the Renuka Karkera, today's guest. She is into the drawing analysis and graphology and logo designing. She has an experience of around 10 plus years into the graphology, especially into the child graphology, because she is an academician and she's been a tutor and a mentor to so many students from last 20 years. She is mentoring the children and help the children to gain the efficacy to the drawing analysis, to the graphology and different modality also. So that's the reason I invite. And also when people talk about my drawing analysis, let me tell you, I have learned the drawing analysis from Renuka only. So she is my teacher into the graphology as well as into the drawing analysis also. So welcome to my teacher, my mentor, Renuka. Renuka, namaskar, and thank you for accepting my invitation to come on my podcast. नमस्ते नीरव। नमस्ते नमस्ते। सो रेणुका, जैसे पहला क्वेश्चन हर स्पीकर को मैं यहाँ पूछता हूँ, ठीक है, कि आपका ग्राफोलॉजी की तरफ, ड्राइंग एनालिसिस की तरफ, इस क्षेत्र की तरफ आना कैसा हुआ? वाज देयर एनी इवन सम इंसिडेंट और देयर वाज एनी प्री प्लानिंग वाज देयर कि मुझे यही काम करना है, या कुछ और लिया था ग्रेजुएशन में और बाद में यहाँ पर शिफ्ट हो गए? कोई ऐसा इवेंट हो गया, या किसी ने बोला आपको, आप प्रभावित रहे, या आपने कोई बुक्स पढ़ी ग्राफोलॉजी के बारे में फिर आप ये फील्ड में आ गए? हाउ देयर वाज अ स्टेप फ्रॉम टू कमिंग टू दिस एरिया? ओवर टू यू। Very frankly, we have been drawing all our lives. You know, Okay. तो ये घर बनाना, सूरज बनाना, माउंटेन बनाना, ये तो हम बचपन से ना केजी क्लास से ये बेसिक ड्राइंग तो हमको आता था, because we used to see these things around us. But जब मुझे मालूम पड़ा there is a science which interprets our personality through these basic elements. So my interest got picked. You know, क्या हो सकता है कि ये ना ये 6 elements से हमारा पर्सनैलिटी, हमारा ऑक्यूपेशन, हमारा बिजनेस, हमारा मन का जो हमारा माइंड सेट है, ये सब समझ में आता है। आर मनी मेकिंग कैपेसिटी। आई वाज लाइक सो इंट्रिग्ड, मैं बोली चलो इसको सीख ही लूं, लेट मी लर्न इट द साइंटिफिक वे। So that picked my interest because drawing has always been in our lives. Yeah, exactly. तो आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन जान सकता हूँ, इफ यू डोंट माइंड, मींस व्हाट इज इट वाज इनटू सम बीएड और समथिंग यू हैव डन, और इट वाज इन अ डिफरेंट फील्ड, योर ग्रेजुएशन? No, I've done my masters in commerce. Commerce. Yes, but I used to always love tutoring kids. अच्छा, okay. So their handwriting used to always intrigue me, you know. अच्छा, तो ये जो हैंडराइटिंग की क्यूरियोसिटी थी बच्चों को लेकर, वो आपको खींच कर इस क्षेत्र की तरफ लेके आई कहीं ना कहीं। ओके, वेल, सो अगेन यस। तो अगर मैं ड्राइंग एनालिसिस की बात करता हूँ रेणुका, तो आप मुझे मतलब सारे दर्शकों को ये बताएं कि ड्राइंग एनालिसिस, क्योंकि कई बार इसके टेक्निकल वर्ड्स भी आते हैं, फ्यू ऑफ द एनालिस्ट, few of the teachers they teach is in a name of metaphor. तो people get scared कि ये metaphor है क्या? metaphor और कुछ नहीं है, ड्राइंग एनालिसिस का एक टेक्निकल वर्ड हो जाते हैं। तो people get scared कि ये है क्या, कोई बहुत ही रॉकेट साइंस है? मैं लोगों को बोलते हैं ये कोई रॉकेट साइंस है नहीं, ठीक है। तो आप एक सिंपल सारे शब्दों में बताइए दर्शकों को कि ये ड्राइंग एनालिसिस एग्जैक्टली है क्या? ये I don't like to complicate things. First thing, कि जितना सरल भाषा में किसी को समझाओ,
या जितना डीमिस्टिफाई करो true. तो पीपल विल बी ड्रॉन टू इट. ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है. सो ड्रॉइंग इज नथिंग बट यू रिप्रेजेंटिंग योरसेल्फ. True. जिस चीज से आप रेजोनेट करते हो उस चीज को आप हम लोग एक्चुअली व्हेन वी टेक द सैंपल ड्राइंग सैंपल वी टेल पीपल टू डू 6 बेसिक एलिमेंट्स ऑन द पेपर Okay. एंड देन इफ दे वांट टू ऐड पेरिफेरल्स, मतलब हम लोग एक सन ड्रॉ करने बोलते हैं. We tell people to draw a range of mountains. Then we tell people to draw a house. Okay. We tell people to do a human figure. Okay. We tell people to do water, and we people to do trees. Typically, नीरव जो हम लोग के सीनरी वाला ड्राइंग है ना. Exactly. बट इसमें बहुत सारी चीजें पता चलती है अबाउट योर फादर, योर मदर, योर लिक्विडिटी, एवरीथिंग. और इसको आपको मैं सूरज करने बोलूं, एक्सपर्ट को सूरज बनाने बोलूं, इट विल बी सो डिफरेंट. Exactly. बिकॉज आप जो मीनिंग होल्ड करते हो सूरज के लिए वो मेरे लिए काफी अलग होगा. दैट इज हाउ वी देन इंटरप्रेट इट. ओके ओके ओके. तो यहाँ इंटरप्रिटेशन हर चीज का अलग अलग देखा जाता है. ये यूनिफॉर्म रीडिंग आती है ड्राइंग एनालिसिस के अंदर, क्योंकि जैसे आपने कहा कि मेरे लिए सूरज का एक इंटरप्रिटेशन अलग हो सकता है, नॉट एज ए एनालिस्ट और मे बी एज अ बिकॉज इन अ सन वी depict as a father figure. So for me the father figure may be very good, for my brother the father figure may be very bad or something else. For an analyst it will be something different. तो कभी कभार ये क्लैशेस एनालिस्ट और एक जो सामने बैठा है ये बीच में बहुत ही यहाँ दरारें आ जाती है और वहां पे लोग फिर बोलते नहीं ये गलत है. ठीक है, ये क्यों ऐसे आते रहता है कि कई बार एनालिसिस सही होता है उसके बावजूद भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है कराने वाले में भी और इंटरप्रेटर करने के वाले में भी. क्योंकि आपका और मेरा एक ही चीज को देखने का नजरिया अलग रहता है. दिस इज बिकॉज आप प्रोग्रामिंग. So a parent has 3, 4 children or 2 children. The child has seen the parent differently based on his experience. Okay. So Okay. for one child, the son might be complete. Okay. Probably because we consider the son as the action figure, the giver of life for this earth. So it is the most important part of our solar system also. Okay, it's true. But for some, the sun is not complete. It depends on his personal experience that is perceived in his lifetime, which is putting on paper. True. तो कहीं ना कहीं इसलिए इंटरप्रिटेशन या फिर परसेप्शन हर इंसान का अलग अलग होता है ड्राइंग को लेकर. अब जहाँ ड्राइंग की हमने बात की है तो लोग बोलते हैं कि ड्राइंग एनालिसिस सिर्फ बच्चों के लिए है या ये बड़ों के लिए भी होता है. व्हाट यू हैव योर ओन preview on this area. It is only for the children because children as a kid we used to make the drawing. तो क्या आज के टाइम में ड्राइंग भी उतना रिलेवेंट है ग्राफोलॉजी की तरह? आपका क्या इस पर विचार है? मुझे ऐसा लगता है ड्राइंग बहुत ज्यादा रेलेवेंट है बिकॉज इट ब्रेक्स द लैंग्वेज बैरियर, द डायलेक्ट बैरियर. यू डोंट हैव टू बी एजुकेटेड टू ड्रॉ. यू जस्ट go to your instincts and you create something on a canvas. You don't need education, you don't need literacy for this. See, you know, and anybody can draw and it is relatable. What you, if I'm telling you to draw a mountain, a sun, it is relatable. ऐसा नहीं मैंने कभी इसको देखा नहीं है, इसके बारे में कभी सुना नहीं है. Because you know when you're drawing, 90% of your brain is active. When you're writing, only 30% of your brain is active. Because एक मॉड्यूल में सिखाया जाता है ना लैंग्वेज, बट ड्राइंग इज फ्री फ्लोइंग, इट कम्स फ्रॉम द तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ग्राफोलॉजी के कंपेयर, आई एम नॉट कंपेयरिंग बट सिंस बोथ आर अ वेरी गुड मॉडलिटी ऑफ रीडिंग द ह्यूमन माइंड, जहां लैंग्वेज में एक बैरियर आ जाता है कि कई बार मैं भी देखता हूँ, आपने भी अनुभव किया होगा कि हम किसी को बोलते हैं लिखिए 10 लाइन, ठीक है, तो लोग बोलते हैं यार मुझे इंग्लिश तो आती है नहीं, मैं तो देवनागरी में करूंगा या फिर मैं अपने तमिल में ही करूंगा. और जो सामने इंटरप्रेटर है और एनालिस्ट है, he do not know the Tamil, he do not know the Tulu language, he do not know the Urdu language, and even he is unable to interpret the readings also because he has learned to the either in English. Probably 99% लोग इंग्लिश में ही पढ़ते हैं लेटर्स को, कम लोग इंटरप्रेट कर पाते हैं. जबकि आपकी बात बिल्कुल सही कि ड्राइंग में इट इज अ यूनिवर्सल साइन, वहां पे तो कोई दिक्कत आती ही नहीं है ना इंटरप्रेटर को ना कराने वाले को. ये एक बहुत सुंदर बात है ड्राइंग एनालिसिस की, और हम सब ने कहीं ना कहीं ड्राइंग किया है, शायद ही हम उस चीज को रिलेट
कर पाते हैं। अब जहाँ रिलेटेबल की बात होती है तो ड्राइंग के आप हमें बेनिफिट्स बता दीजिए, एक जो नॉर्मल लेमैन की लैंग्वेज में, कि ड्राइंग के बेनिफिट क्या है, क्यों कराना चाहिए मुझे आपसे ड्राइंग एनालिसिस, क्या कारण है, उसके फायदे क्या क्योंकि होते हैं, जहां हम फायदा जा रहा है वो आप आप बोलिए। बहुत चीजें अपने लाइफ में, you are searching, definitely all of us are searching for an answer in our life, searching for a meaning जो हम पिन पॉइंट नहीं कर पा रहे। बोलते हैं ना, when you are in between a problem you can't see your problem. Exactly. So this helps you to see your thoughts on paper. You Okay. can read why you are facing a certain obstacle, why you are not getting married, why you are not able to make money. You understand where that block is coming from, or where the good things are coming from. Okay. So this can be seen when you're interpreting what is in your mind on the paper. Okay. Okay. Just penning your thoughts on paper. Okay. Okay. So apart from the knowing your own patterns of your brain, of your neurons, क्या ये जैसे हम ग्राफोलॉजी में भी देखते हैं कि स्वॉट एनालिसिस थ्रेड, वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेड, क्या उसको भी ये निकाल सकता है कि मुझे कहाँ से डर लगता है, मुझे किस चीजों में अपॉर्चुनिटी अच्छी है, या मैं कहाँ पे अच्छा हूँ, क्या यहाँ पर भी हेल्प करती है ड्राइंग एनालिसिस? ओवर टू यू। आप एक बात बता दो नीरव कि ग्राफोलॉजी में व्हेन आई सी माय स्क्रिप्ट, आई सी द shortcomings, I see the strength, I see certain points are highlighted, I can incorporate change. But when I see my drawing, when I see an incomplete sun, from the next day I cannot make a complete sun and say ना मेरा mind में correction आ गया. Exactly. But I can work on myself when I see the pitfalls in my thought process. हाँ, मैं वो ड्राइंग ऑल्टर करके चीज ऑल्टर नहीं होगा, बट आई नो वेयर फ्रॉम वेयर आई हैव टू टेक अ डिफरेंट रूट। ओके। तो जैसे आपने बहुत सही चीज बताई, देखिए जनरल ग्राफोलॉजी में जो हैंडराइटिंग एनालिसिस हम करते हैं उसमें तो जी और वाई या कोई भी लेटर जो इनकम्प्लीट है उसके जो डिस्टॉर्शन है उसको हम एक, नॉट आई कैन से कंप्लीट थेरेपी, बट वी ट्राई टू गिव हिम टू मेक अ स्पेसिफिक फॉर्मेशन, ताकि वो फॉर्मेशन अच्छे होने से उसके माइंड पे वो ट्रिगर होता है। जब आप बोल रहे ड्राइंग में ऐसा नहीं हो सकता कि सन अधूरा बना है तो उसको पूरा बना तो एक्शन होना शुरू, मतलब यहाँ पे आप कार्मिक रिएक्शन पे बात कर रहे हो कि आपको कर्म करना पड़ेगा, तो अपने आप वो वहां पर रिफ्लेक्शन होना शुरू हो जाएगा लेटर ऑन। क्या यही नहीं नीरव, नो आई एम टेलिंग कि इफ यू सी, लेट मी टेक द सन, इफ यू सी एन इनकम्प्लीट सन, यू have to now understand why did you see the sun as incomplete. Okay, ठीक है। Definitely most of us, if I ask most of us who are here in the audience, if I ask them to draw a sun, each one of them will have a different sun regarding its shape, size, the rays. You have to now understand, once it is interpreted, why you're thinking in that way and what can be done to correct that thinking if there is any distortion per se. आप ऐसे क्यों करना, वो हम क्यों के ऊपर एड्रेस कर सकते। ओके। अच्छा, जहाँ मे बी थ्रू ग्राफोलॉजी देन। तो यहाँ पे क्या रेमेडी दी जाती है ड्राइंग एनालिसिस में रेणुका जी? इसमें लाइक पीपल गिव द रेमेडी टू ग्राफोलॉजी, व्हाट अबाउट द ड्राइंग, डू इट इंक्लूड द रेमेडी और इट इज जस्ट इंटरप्रिटेशन पार्ट? See, first of all, we make that person, suppose, I wouldn't want to tell about others. If I see a problem in my script, I see my method of making money is not correct. Like maybe, I'm not taking certain things into consideration. I'm not taking risks. So I'm aware I'm doing that. And then I'm told कि भाई ऐसे करने से फिर ऐसा होगा. Then, I mean, on understanding the problem, we can change the trajectory. Okay. कि भाई नीरव अभी लेफ्ट से नहीं जा, अभी आप राइट से जाना शुरू करो. Okay. So then the thinking process has to change. Okay. Great. तो when we talk about the thinking process, तो ये thinking process के लिए हम ड्राइंग का यूज करते हैं, हम कहीं ना कहीं हम ये भी यूज करते हैं ग्राफोलॉजी में। तो कौन सी एज ग्रुप में हम ड्राइंग ले सकते हैं, बच्चों की या बड़ों की? Is there any, like in graphology we do not take 10 years old, 12 years old the pattern, the written pattern of the child. So what is the age group we can start taking? क्या 2-2.5 साल के बाद ले सकते हैं ड्राइंग बच्चों का?
what is the age group you prefer, or the analyst generally prefer for both adult and the bachos? बच्चों का लिया तो यस नो, बच्चों का लिया तो बहुत ही बढ़िया है, because children don't lie. They are non-judgmental. They will present it as is. You understand the mindset of a child's parents, grandparents through its drawing. And बच्चों को, if you catch them young, it is easier to mold. And we usually address the parents when we see some problem in the child's drawing, because he is a representation of his parents. Is a representation of their programming. Exactly. So we can address. Okay. Yeah. So when we talk, we can address. So that means whatever we are interpreting as a drawing analyst, it is the reading of the parents only, 0 and 1. We generally we tell Shiv or Shakti. तो कई बार ऐसे मुझे भी आते रहते हैं, स्पेशली दे आई टेल देम गिव मी द ड्राइंग, तो फिर भी वो पेरेंट्स नहीं मानते, दे गिव देम द रिटन स्क्रिप्ट. 5वीं में है, 4ठी में है, नर्सरी में, दे गिव द स्क्रिप्ट एंड देन व्हेन आई टेल कि इसके ऊपर वर्कआउट करो पेरेंट्स के ऊपर, मतलब ईदर ऑफ देम और बोथ ऑफ देम, फिर उनका जवाब नहीं आता. क्या ऐसा आपके साथ में भी होता है? बिकॉज पीपल फील लाइक मैं अपने बच्चे की 5 साल के बच्चे की हैंड राइटिंग चेंज करवा देता हूँ, सब चीजें सही हो जाएगी, एंड दे आस्क कि क्या हो रहा है मेरे बच्चे के साथ. तो हाउ यू डील विद सच टाइप ऑफ पेरेंट और सच सिचुएशंस, आइदर टू द ड्राइंग और टू द हैंड राइटिंग पैटर्न? See, I try talking to the parents first, with the mothers. Okay. Because the mothers are, that is why in schools we prefer to have female teachers. Okay. Mothers are the greatest teachers in this world. Exactly. So if I'm able to convince the mothers, I think I've done a good job. But many a times the mothers are not ready to change. Yeah, ये होता है. If the mother is ready to change, if the mother is ready to see what she has been doing or how she's been dealing with the children, which needs a bit of correction, if the mother is ready to accept her mistakes, then we can do. I cannot merely tell the child to change his writing. कुछ नहीं होगा. जबकि आज मैं बोलूं और कल माँ फिर अपना प्रोग्रामिंग डालते जाएगी. हाँ, ठीक है. तो कहीं न कहीं पे mother has to take the initiative to change. और अगर मदर इनिशिएटिव लेती है उस एक्शन में आकर, तो कितना टाइम लगता है वो रिफ्लेक्शन चाइल्ड में देखने का? एनी कोई टाइम फ्रेश, कोई टाइम लिमिट है कि मदर ने काम करना शुरू कर दिया, एक्सेप्ट करना? आज के टाइम में तो ऑनेस्टली देखा गया तो रेणुका जी बहुत कम मैं देखता हूँ मदर को, अगर हम बोलते हैं टू द चाइल्ड ड्राइंग और एनीथिंग, वो इतना वर्कआउट तो करते हैं नहीं. फिर भी अगर कोई पूरी शिद्दत के साथ करता, कितना टाइम लगता है वो रिफ्लेक्शन बच्चे में दिखने में? कोई टाइम लिमिट है इसमें? Mothers are very beautiful creatures. Mothers immediate response invoke कर सकती है बच्चों में. I being a mother of 2 sons, I know immediate response, but the effort should be sustained. Because as a mother, if I am used to controlling and telling my child what to do, what not to do, तो मुझे टाइम लग रहा है to give away that habit. कि बच्चों को टोकते रहना, ये करो, ये मत करो, stop nagging. तो मेरा प्रोग्रामिंग सेट है, बच्चे का सेट नहीं है. He is just being molded by me. तो मैं बेबी स्टेप्स लूं, शायद नीरव 10 दिन करूं, 12वां दिन I will slip up. Okay. So the onus is on me. तो सारा टेस्ट और एग्जामिनेशन मेरा है. So once I am successful, the child is definitely successful. Okay. Now this is about, you told that the mother programming, what of the father programming played the role in drawing analysis? वहाँ father का भी कोई ना कोई role play होगा. जैसे we talked the son about the action taker is seen by the father. तो वहाँ पे उनका रोल कब आता है पेरेंट्स में, फादर का, into the drawing analysis? It is only after it is. उनका रोल बहुत no. See, as soon as the child is born, I believe the father programmer has to be the support for the mother programmer. Okay. You understand? The mother programmer has to provide the nourishment and love and emotion to the child, but the father programmer should be able to provide. Somebody is supposed to provide for them. In the event the father is not able to do so, the mother is not able to give all her emotions. Then once the child crosses the age of 7, he starts physically developing. He starts growing. इसके लिए PT teacher, maths teacher सब sirs है ना, 5th standard के बाद आते हैं. Yes. When he is physically growing, the child's father should be around him. By 14 or 15 or 16, when he reaches puberty, his programming
becomes complete. Now this father then becomes a reference guide all his life. If you don't have a strong father figure in your life, or if you don't aspire to become like your father or look up to your father, you'll have issues with your teachers, your mentors, your every other relationship with other male gets a bit disturbed. Okay. So your father figure becomes a big, base, you can say, for your action taking capacity in your life. Okay. Okay. Yeah, but just अभी mental around health. That's my friend. She is also a very good counselor as well as the metaphor expert also. She has been commenting that rightly said that, but it's rarely the parent accept the changes they need to make on themselves. बात सही है कृष्णा कि आज बहुत कम पेरेंट्स उस चीज को, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानते हो, रेणुका जी भी जानते हैं कि वो जल्दी से एक्सेप्टेंस मदर्स में आ नहीं रहा है. मे बी दैट बिकॉज ऑफ द फॉल्टी लाइफस्टाइल एंड बिकॉज दे आर नॉट फॉलोइंग हाउ टू. सब गर्भधान संस्कार की तरफ तो बढ़ रहे हैं, सब नॉलेज तो ले रहे हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन आ ही नहीं रहा है उन मदर्स के अंदर में. ठीक है, आज मुझे लगता है बहुत सारे क्लासेस भी शुरू हो गए गर्भधान संस्कार के. बट आई थिंक बिफोर अ गर्भधान संस्कार जो डिस्टॉर्शन आ रहे हैं ना कपल्स में, वो क्लियर होने चाहिए, तब जाके ये चीजें क्लियर हो सकती है. वो खाली गर्भधान संस्कार से, आई एम सॉरी आई कैन बी वेरी हार्श विद द पीपल हु आर लिसनिंग टू मी और हु मे बी लिसनिंग टू दिस रिकॉर्डिंग, लेकिन गर्भधान संस्कार मेरे हिसाब से बेकार है. जब तक वो डिस्टॉर्शन क्लीन नहीं है उस कपल्स के अंदर में, तब तक तो वो सारी चीजें बेकार है. ठीक है, और वही चीज हम when the child is born we can able to see in the handwriting and drawing also. So now when we talk about the garbhadan sanskar, so what is the role of the mother during the period of conception, उस टाइम से लेकर till the born? तो अगर उस टाइम पे वो अपने ऊपर वर्कआउट करते हैं रेणुका जी in a form of written pattern or drawing, will it reflect into the child when the child is born and become up to 2 years of age? या graphology या drawing में I think it goes before conception. Okay. आप conception से पहले की बात करो. Okay. For you to have a child that you desire have a certain personality, you have to accept the child of your mother-in-law. Okay. अच्छा, your husband. Acceptance level, yes. Yes. Okay. You have to accept the child of your mother-in-law. उसके तरफ से आपका जो अगर उसका तरफ आपका mental alignment नहीं है fulfilling, so you will always have that lacuna in your relation with your child. Okay. You have to accept him as her child. You have to accept your husband as his mother's child. जो मैक्सिमम केस में नहीं हो रहा आज. वो नॉन एक्सेप्टेंस है. हाँ, yes. तभी इतने डिवोर्स केसेस मुझे लग रहे हैं. If you are not able to, yes. If you are not able to accept that, you feel my husband should not be listening to his mother, but my child should listen to me. It's not going to happen because you're setting an example to the child. Yes, exactly. आपने बहुत अच्छा, बहुत ही बड़ा पेन पॉइंट है कि आज की लड़कियां चाहती है कि आप मेरी सास से बात मत करो, आप घर से अलग हो जाओ, मुझे अलग घर चाहिए, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए. एंड व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न, शी एक्सपेक्ट दैट माय चाइल्ड शुड लिसन टू मी. A controlling type mother. I think यही मैक्सिमम घरों में हो रहा है because of the nuclear family is born from last 20 years. तो ये चीजें बढ़ती ही जा रही है. डिस्टॉर्शन जो आप बोल रहे हो कि एक्सेप्टेंस हस्बैंड का ही नहीं है, तो बच्चे का कैसे हो सकेगा? ठीक है. अब जहाँ ड्राइंग, I don't like a controlling mother-in-law, but I want to be a controlling mother. नहीं हो सकता है. नहीं होगा. तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है रेणुका जी के आगे जाके वो उसका बच्चा, मतलब उसका चाइल्ड ऐसी बीवी को लेके आ जाएगा जो उसको पसंद नहीं आएगा. अगेन द रेप्लिका ऑफ हो सकता है पॉसिबिलिटी इसमें. Don't love my mother-in-law. Yes. No matter how bad she is, if I don't accept her, I can't expect my daughter-in-law to have a very good relationship with me because I have a problem seeing everyone. Probably she'll also see a problem in me. एग्जैक्टली, सही कहा. अब जहाँ रिलेशनशिप की बात आती है, तो रिलेशनशिप हम ड्राइंग में रेणुका जी कहाँ देखते हैं? डू वी लुक इनटू स्पेसिफिक कोई एलिमेंट्स में देखते हैं, या ओवरऑल अगर मुझे रिलेशनशिप के बारे में जानना है ड्राइंग के बारे में, कि फॉर एग्जांपल कृष्णा जी आ गए हमारे ऑडियंस जो हमारे साथ में, उनकी अगर रिलेशनशिप जानी, उन्होंने कुछ एलिमेंट्स ड्रॉ किया हो, ठीक है, तो कैसे पता चलेगा कौन से एलिमेंट पे हम एक प्रकाश डाल सकते हैं कि हाँ इनकी रिलेशनशिप ऐसे हो गया? आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल कृष्णा, डोंट फील बैड, जस्ट गिव मी एग्जांपल. या रेणुका जी.
एक ड्राइंग है, मैं आप लोग को, whoever has not done drawing analysis understand this. When you do a drawing, एक टिपिकल है ना, हम लोग ये 6 एलिमेंट्स बताते हैं, यहाँ सूरज है, यहाँ पहाड़ है, यहाँ झरना है, यहाँ घर है. If you feel when you look at the drawing, there is no alignment of these elements ना, मतलब आपके लाइफ में कुछ तो गड़बड़ी है. ओके. अच्छा, रहा रिलेशनशिप की बात. If you see a person drawing a house, because house is something you create and then you live inside it, and house is something you relate to your mother programming. Why? I'll tell you, because the first house you have lived in is your mother's womb. So house हम लोग घर में क्यों जाते हैं, काम करके घर के अंदर क्यों जाते हैं? After doing all the work and everything at home, दुनिया भर में झगड़ के, you go there for security and comfort. True. So अगर ये घर, अगर हम बोले घर का दरवाजा जो है, if in the drawing we have shown the घर का दरवाजा बंद है, मतलब when you came home, your mother was not receptive to you. बेटे आज का दिन कैसे गया, आज आपको कैसे. Many mothers just ask, how was the day, and the child feels nice. If the door is locked, it means मेरा मन का द्वार आपके लिए बंद है. अच्छा. Okay. घर के अंदर कोई आ सकते हैं, मेरे मन में सबको फ्री एंट्री नहीं है, सिलेक्टिव हूँ. तो आते ही मैं जो करूँ रिलेशनशिप देयर. Okay. Now when you talk about the दरवाजा बंद है, तो वही खिड़कियाँ क्या इंगित करती हैं? What the windows stepping into the house, especially if there is a curtain or there is window or there is no window. There are different interpretations are there. So how do you see the window? Windows are open for somebody's suggestions. आप विंडो से सामान नहीं ला सकते. विंडो से हम देख सकते हैं दुनिया को, तो दुनिया हमको देख सकती है. So I'm very selective, कौन मुझे देख रहा है, मैं किसे देखूं, किसका कितना आइडियाज लूं, नीरव का कितना बात सुनूं. नीरव द ई क्लोज कंसेप्ट, नीरव के बात में कितना दम है. Why should I believe him? Why should I listen to her? Yes. Okay. So somewhere else I can say the listening, the ears is stepping into the form of window. Okay. Now when we talk about this, the relationship, what about the growth? Because मैक्सिमम लोग ग्रोथ की बात करते हैं तो लोग सोचते हैं कि पैसा सिर्फ पैसा आता है, सिर्फ पैसा. तो पैसे को या ग्रोथ को या सक्सेस को हम ड्राइंग में किस जगह देखते हैं, या आप कैसे देखते हो ड्राइंग में? अगर ग्रोथफुल ड्राइंग है, क्या एलिमेंट्स ऐसे, क्या पिक्चर्स आती हैं या एलिमेंट्स आते हैं जिससे आपको पता चलता है ये ग्रोथ होने वाला है या डिग्रोथ में जा रहा है? हाउ यू कनेक्ट द ग्रोथ एंड सक्सेस इनटू द ड्राइंग? All people who have been successful, all the people have been successful in life. I wouldn't measure it by the quantum of money. Successful is getting into something and getting whatever you wanted. These people have been able to diagnose and understand the problem in hand. Okay. Or the problem in society. So whoever could solve the problem, or whoever has the acumen to solve a problem, is able to make money. Okay, exactly. Maslan, if my father realized, people come to Bombay and there is nothing to eat, let me open an eatery. So he realized the problem is not having enough eating houses. So when you अगर आप ये पत्ती वाले को ले लो, रद्दी वाला, he understand people's problem of disposing their raddi and their, their old scrap. So he opened the raddi ka dukan. So when I establish that I know what the problem is and I can solve this problem, I get money for solving problems. And this has been given to me by my father, who was able to, when we see the mountains, mountains में. Okay. The mountain shows the mountain, the height of the mountain shows the challenges faced by my father. Okay. The challenges faced by my father, the base shows the foundation he had laid to solve the problem. Okay. So somewhere else we can see. I'll take my cues from him. Yes, we can definitely see. So whether how you good you are in dealing with the solution or with the problems, and from that solutions you can earn a good money. So we can see from the mountains, from the combination of different elements also. What I can understand.
ओके, तो यहाँ पे ये इसका भी होगा। You take any problem, Nirav, any problem, ओके, any problem solving. आप फूड बोलो, टीचिंग बोलो. I give just two examples. मतलब when you came home, your mother was not receptive to you. बेटे आज का दिन कैसे गया? आज आपको कैसे? Many mothers just ask, how was the day, and the child feels nice. If the door is locked, it means मेरा मन का द्वार आपके लिए बंद है. अच्छा 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 अच्छा, ओके. घर के अंदर पे आ सकते हैं. मेरे मन में सबको फ्री एंट्री नहीं है, सिलेक्टिव हूँ. सिलेक्टिव, हाँ हाँ हाँ. तो आते ही मैं जब करूँ रिलेशनशिप देयर. ओके ओके. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट द दरवाजा बंद है, तो वही खिड़कियां क्या इंगित करती हैं? व्हाट द विंडोज स्टेपिंग इनटू द हाउस, स्पेशली इफ there is a curtain or there is window or there is no window. There are different interpretations are there. So how do you see the window? Windows are open for somebody's suggestions. आप विंडो से सामान ले ला सकते हैं. विंडो से हम देख सकते हैं दुनिया को. दुनिया हमको देख सकती है. So I'm very selective. कौन मुझे देख रहा है, मैं किसे देखूं, ओके, किसका कितना आइडियाज लूं, नीरव का कितना बात सुनूं. नीरव द ई क्लोज कंसेप्ट. नीरव के बात में कितना दम है. Why should I believe him? Why should I listen to her? Yes. Okay. So somewhere else I can say the listening, the ears is stepping into the form of window. Okay. Now when we talk about this, the relationship, what about the growth? Because मैक्सिमम लोग ग्रोथ की बात करते हैं तो लोग सोचते हैं कि पैसा पैसा, सिर्फ पैसा आता है, सिर्फ पैसा. तो पैसे को या ग्रोथ को या सक्सेस को हम ड्राइंग में किस जगह देखते हैं, या आप कैसे देखते हो ड्राइंग में? अगर ग्रोथफुल ड्राइंग है, क्या एलिमेंट्स ऐसे, क्या पिक्चर्स आती हैं या एलिमेंट्स आते हैं जिससे आपको पता चलता है ये ग्रोथ होने वाला है या डिग्रोथ में जा रहा है? हाउ यू कनेक्ट द ग्रोथ एंड सक्सेस इनटू द ड्राइंग? All people have been successful. All the people have been successful in life. I wouldn't measure it by the quantum of money. Successful is getting into something and getting whatever you wanted. These people have been able to diagnose and understand the problem in hand. Okay. Or the problem in society. So whoever could solve the problem, or whoever has the acumen to solve a problem, is able to make money. Okay, exactly. Maslan, if my father realized, people come to Bombay and there is nothing to eat, let me open an eatery. So he realized the problem is not having enough eating houses. So when you अगर आप ये पत्ती वाले को ले लो, रद्दी वाला, he understand people's problem of disposing their raddi and their their old scrap. So he opened the raddi ka dukan. So when I establish that I know what the problem is and I can solve this problem, I get money for solving problems. And this has been given to me by my father, who was able to, when we see the mountains, mountains way. Okay. The mountain shows the mountain, the height of the mountain shows the challenges faced by my father. Okay. Okay. The challenges faced by my father, the base shows the foundation he had laid to solve the problem. Okay. 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 So somewhere else we can see. I'll take my cues from him. Yes, we can definitely see. So whether how you good you are in dealing with the solution with the problems, and from that solutions you can earn a good money. So we can see from the mountains, from the combination of different elements also. What I can understand. Okay. तो यहाँ पे ये इसका भी होगा. You take any problem, Nirav, any problem. Okay. Any problem solving. आप food बोलो, teaching बोलो. I give just two examples. You identified a problem and then you generated a solution. Okay. You're making money for that. Okay. Great. देखिए, अगर जैसे आपने बोला प्रॉब्लम्स और सॉल्विंग, तो क्या बिजनेस को भी हम इसमें देखते हैं कि बिजनेस में इश्यू आ रहा है, तो क्या वो ड्राइंग एनालिसिस में या कोई जॉब पर है, जॉब सीकर है, Exactly. जॉब, क्या ये भी दोनों ही चीजें इसमें ड्राइंग में रिफ्लेक्ट होती हैं? Yes, job seeker is trying to find an institute which is solving problems and wants to be absorbed in that institution. Okay. तो ये ड्राइंग में दिखता जरूर है, ठीक है. और जहाँ ड्राइंग की बात आती है, आई रिमेम्बर वंस मिलिंद Rajureser, that was the introductory class of drawing. He told us about चोरी.
तो चोरी दिखती है ड्राइंग क्या नाम है, मैं इतना पूरा लेक्चर तो याद नहीं है, तो आई वाज सरप्राइज कि ड्राइंग से किसने चोरी की ये भी पता चलती है। आई थिंक ही वेंट टू सम डायमंड ट्रेडिंग कंपनी और सम फैक्ट्री, और वहाँ चोरी हुई थी एंड ही वाज बीन कॉल्ड फॉर नोइंग कि भाई किसने चोरी की है। तो क्या ये भी पता चलता है ड्राइंग के अंदर में? यूजुअली चोरी, ग्राफोलॉजी का साइंस अगर आप माइन्यूटली समझो, अगर मेरे घर में चोरी हो रहा है ना, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम मैंने कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली चोरी की है, फर्स्ट थिंग। अच्छा, ओके, हाँ हाँ हाँ, यस, नहीं तो इफ यू कैन कॉल इट कर्मा, इफ यू कैन कॉल इट पे बैक और व्हाटएवर। ओके ओके, तो समवन सबके घर में चोरी नहीं होता है, माइंड यू। हाँ ठीक है, मैं समझ गया, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि, जो कि मैंने एक आर्टिकल देखा था, हाउ टू trace the lost object through numerology, आज भी रैंक कर रहे हैं विद गॉड ग्रेस एंड रैंकिंग इनटू द सेकंड एंड थर्ड पोजीशन इन गूगल। तो वहां पे इंक्वायरी इसलिए आती रहते हैं, टेल देम कि आप वहां कांग्रेचुलेशंस। ठीक है, तो लोग फिर बोलते हैं कि मेरे घर पे चोरी क्यों हुई, दे आस्क मी कि मेरे यहाँ पर 20,000 चोरी हो गई सर, मेरी जो पर्स थी वो चोरी है। वैसे लेडीज आर ऑलवेज कंप्लेनिंग एंड दे कीप ऑन पिंगिंग में ऑन व्हाट्सएप के सर मेरे यहाँ चोरी हो गई, सर मेरा डॉक्यूमेंट गुम हो गया। मेल्स बहुत कम आते हैं, ठीक है, तो मैंने ये देखा कि दे आस्क मी सर मेरे घर पे क्यों ऐसा हुआ, चोरी मेरे घर पे क्यों हुआ। तो इवन आई वाज क्वेश्चनिंग टू माई सेल्फ कि भाई अब इसका जवाब मैं क्या दूं कि आपके घर पे चोरी क्यों हुआ। टुडे यू गिव द आंसर कि भाई तुमने ही कहीं ना कहीं चोरी किया होगा, तो उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है। दे यूजुअली पिन पॉइंट के शायद मेरे मेड ने या सर्वेंट ने लिया होगा, चोरी उसने नहीं किया होगा, ठीक है। तो ये चोरी का जो गुम हो जाती है कोई चीज या चोरी हो जाती है, ये इसलिए मैं पूछना चाहता कि ये आजकल बहुत आ रही है बिकॉज ऑफ माई आर्टिकल ऑल्सो रैंकिंग इन गूगल एंड आई एम गेटिंग लॉट्स ऑफ इंक्वायरीज कि सर आप ढूंढ के दो। मैं बोला चोरी का माल मैं कहाँ से ढूंढ के दो, पुलिस तो होने में, ठीक है, बट स्टिल दे हैव द क्वेश्चन। तो आपने हाँ, जाने अनजाने में आपने या तो पार्टेकन द चोरी का माल, नीरव ने चोरी करके लाया और मैंने उसका भोग किया, वो वन थिंग। नहीं तो इफ यू नोटिस देयर आर सम पीपल, इनके घर पे एक ही दरवाजा रहता है, हाँ, एंड देयर आर सम पीपल हैव सच अ कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी सिस्टम, इवन देन देयर मनी गोज, यस, then it is questionable. Now somewhere you have taken something which is not yours. See, when you take something which is not yours, eventually it will go to the rightful owners. It can be seen in the drawing actually when the flow of water goes on the wrong side. Okay. And the flow of water goes to the wrong side, you know, or it is starting from the wrong. Usually valley से पानी निकलना चाहिए, but किसी का mountain top से निकल रहा है, हाँ, किसी का है ना कहीं से भी, you know, from where the source is not seen. Unknown source है। अच्छा। Most of our, if you see, most of our rivers, yes, most of our rivers originate from the mountain. Mountain valley से पिघल के आ जाता है, but वो peak से ऐसा निकल रहा है कि और कहीं से निकल रहा है, you know, you just don't know the source, just randomly कहीं से निकल रहा है। So this person is also like, you know, not telling you where the source is from. Okay. So that we can interpret it that somewhere the source of income is not ethical. It's not coming on the base of ethos and strong foundation है ही नहीं उसका, तभी उसके घर पे भी चोरी हो रही है क्योंकि मैंने किसी और का माल हड़पा है, तो आज मेरा भी माल कोई ना कोई हड़प के लेके गया है। The karma work, we can say. Yes, you have to. Yes. ये तो बात चोरी की होगी। बात दूसरा मैं करूंगा एकेडमिक्स के ऊपर में, क्योंकि आप खुद एक मेंटर रहे हूँ और आज भी 2 दशक के बाद भी आप अभी भी सिखा रहे हो, बच्चों को मेंटरिंग कर रहे हो। तो क्या ऐसी इश्यूज आती हैं बच्चों में एकेडमिक्स में, और आप ड्राइंग में या हैंडराइटिंग में कहाँ उसको पता लगाते हो कि बच्चों की कंसंट्रेशन वीक हो रही है, या बच्चा इरिटेट हो रहा है, या ADHD आ रहा है, या उसको डर लग रहा है, या पेरेंट बहुत कंट्रोलिंग है, ऐसे बहुत सारे इश्यू होंगे जो आप बेटर जानते हो। ऐसे क्या इश्यूज आप देखते हो ड्यूरिंग all children, Nirav, in fact, all human beings are receptive to love. True. When you show the children the kind of love and affection and non-judgmental. When I take tuitions, I tell the children, I'm not expecting marks from you all. So I'm just wanting you all to enjoy. When I tell them to enjoy, their guards are down, and then they want to learn a few things. Okay. So
I am not a big fan of 90s and merit holding and all that. If the child is unhappy, because most of the students, if you ask them, keeping their mothers to one side, they are not interested in the marks part. They become very, very competitive if they are given that sort of a picture. You need to be very, if you need to be very happy, you need to be above 95%, you need to pursue this field, and you need to do this and that. If you just keep all this aside and ask the child what he wants to do, he just wants to play, he wants to laugh, he wants to talk. So when you allow him to do this, then it is easier to tell him to study. Okay. The reason I don't believe in unhappy qualified people. I don't believe in this structure at all. आप बहुत ही ज़्यादा पैसे बना रहे बट अंदर से खुश नहीं हो. खुश नहीं हो. मैं इसलिए ये क्वेश्चन पूछने का एक विशेष मकसद था कि मैं देख रहा आजकल अभी तो वो ऐड चलेंगे. लॉकडाउन में वो कोडिंग जूनियर या कुछ तो आया था. बैजू ने उस कंपनी को खरीदा था. बैजू इनटू द एप्लीकेशन ऑफ एजुकेशन. उन्होंने उसको खरीदा था जूनियर कोड या कोडिंग जूनियर करके कि आप 5 साल के बच्चे को कोडिंग सिखाओ. तो आई वॉज इन थिंकिंग पैटर्न क्या अगर 5 साल का बच्चा हर एक को माँ बाप के दिमाग में ये डाल दिया उन एजुकेटर्स उन मार्केटर्स ने आप भी अपने बच्चे को बचपन में कोडिंग बोडिंग सब सिखाओ और उसको मार्क जगरबर्ग बनाओ या उसको बिल गेट्स बनाओ. सो I thought that was a very wrong way of presenting your child as a billionaire by doing the coding and all those things in a very small age, a tender of 5 to 8 years. अब बोलेंगे coding ही करो. I'm not against any industry or any educator, but I feel लगता है कि भाई आप हर एक को कोडर कैसे बना सकते हो. और अगर बच्चा मान लो 5 साल 8 साल में कोडिंग सीख गया, again the extremely stressful and one programming very should have the zero programming mother programming. वहां पर उल्टा हो रहा है. तो मुझे लगता है वो चाइल्ड के डिस्टॉर्शन कितना आ जाएगा. आप क्या कहते He is not happy. The child is not happy. 7-8 घंटे उसके माँ है ना पहले भेजेगी कोडिंग क्लास, देन भेजेगी गिटार क्लास, देन भेजेगी. He is staying in a very controlled. You have to understand, when we were children, we used to play in the mud, we used to go to the beach, we used to just waste our time doing all silly things. We are in a much happier frame of mind now. If you ask a child, he is not wanting to do this. If he is happily doing, like in this 3 Idiots, you show this Ranchod Das, na? It's a very beautiful movie with a very beautiful message. अगर आपका बच्चे का नेचुरल एप्टीट्यूड है, मैं नहीं बोल रही कि बच्चों को पढ़ाई के लिए एनकरेज मत करो. टेल देम टू टैप देयर पोटेंशियल, बट लेट अस नॉट डिप्राइव देम ऑफ देयर चाइल्डहुड एंड व्हाट इज राइटफुली देयर्स एट दैट एज. 4 मार्क्स कम आए तो कोई दुनिया उजड़ने वाला नहीं है. इट्स नॉट दैट the child should be slacking in his studies. I'm against that. He should be having a disciplined approach to it. मगर फन के लिए प्लीज टाइम रखो. Let him draw, paint, do silly things because these matter. जी, जब आपने कहा कि वो मार्क्स मेन क्राइटेरिया है आपके लिए, आप बच्चों के साथ डील करते हो, लेकिन पेरेंट्स तो आज रेणुका जी यही सोचते हैं कि 90 मार्क्स आना चाहिए, मेरे बच्चे का भी फोटो एडवर्टाइजिंग होर्डिंग्स पे आना चाहिए कि फलाना फलाना क्लासेस में 90%, 80%. आई थिंक दैट्स द रीजन दिस रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आई कैन से जो वसूली वाला जो माइंडसेट है, दैट इज आल्सो लीडिंग टुवर्ड द सुसाइडल टेंडेंसी. कई बच्चे आई थिंक कहीं आईआईटी और कहीं पर 2 महीने पहले सुसाइड किया था किसी बच्चे ने आईआईटी में. आई डोंट नो आईआईटी और आई वाज शॉक्ड. The young child, the very young, he's कोटा राजस्थान. Yes. ठीक है. तो ये मदर प्रोग्रामिंग बोल सकता हूँ इसको, या एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीयर प्रेशर फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. व्हाट इज द रूट कॉज व्हाई द चाइल्ड prone toward the suicidal tendencies? What is your? It is the mother programming, no? It is the mother programming. You see girls living in hostels. I am not biased against boys or something. Girls living in hostels, girls pursuing engineering are more into smoking, drinking, addictions. This is some sort of an escapism, no? True. Chika. What I believe, Nirav, is if you allow a child to do what he is happy with, he will be successful. He has to be successful. I agree with you. Again, one of the class when mentor Rajura sir has told कि जो लोग 90%, 80% marks लाते हैं, again they are the cursive handwriting, but when they get exposure to the world, the real world, they are not that successful. Again, I am not neither me nor Rajura sir or any other people, the analysts. We are against the
academics, but it is really seen, he told कि those who are into the completely theoretical knowledge 80% 90% चाहिए, और वो लोग फिर आगे जाके पूरी तरह से रियल वर्ल्ड में कुछ कर नहीं पाते, जहां हमारे जैसे डफर लोग जो आई वॉज द 35-40% पास हो, उससे ज्यादा कभी आया नहीं। 50 तो रेयरली 50 आते रहता था, 40 और 50 के बीच में झूलते रहता था, और वो भी इसलिए कि मेरा बाप मेरे को मारे नहीं, बस यही एक डर था, बिकॉज माय फादर यूज्ड टू शाउट एट अस व्हेन ही सी द रिजल्ट फेल हो गया, सो आई वाज लाइक यार फेल नहीं होना है, बस इतना कर दूं कि पास हो जाओ। दैट वाज माय माइंडसेट इनटू द 10th क्लास, इनटू द 12th क्लास। देयर वाज नथिंग लाइक, एंड देयर वाज नो एनी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन इन माय होम कि आपको 90% ही लाना है, ठीक है। तो ये मैंने भी देखा था, और इसीलिए मैं, हाँ जी, हाँ रेणुका जी, ये जो डड्डूज है, जो एवरेज मार्क्स लाने वाले हैं ना, these are the ones who open a firm and absorb the 90% to work for them. That is the irony, you can say. Yeah, we can say definitely. Not discounting both of them. No, not discounting both. There is Sundar Pichai. There are many people who have actually rightfully deserved the position they are in. I'm not being comprehensive about this, yes, but to a large extent, yes. Because if you're pushed to do something against your liking, you will not be successful in the long run. So maybe in the case of Sundar Pichai, it's not possible. Maybe in the case of Sundar Pichai, yes, वो academically are very strong, उनके खुद की अपने आप inclination थी, मदर ने फोर्स नहीं किया होगा कि बच्चे तो 80% ही ला, ये तो 90% ही ला, तेरे को IIT बनना है, तेरे को IIM में ही आना है, तेरे को फॉरेन में ही भेजना है। And I remember one of my relatives, just few months back, I went to meet them, and the person told me कि मेरे बच्चे को IIT में डालना है, and I was looking at the handwriting. He was around in 12th pass, just passed out the 12th, and I see it was more into the creative side. So I told the mother that your child is very good at the creativity, and yes, he told me he also play very well the guitar and piano. But why don't you incline him toward this area, the creative part? No, मुझे तो उसको IIT बनाना है, मुझे तो IIT में डालना है, कोटा में ही डालना है। तो आई वॉज वेरी शॉक्ड, सब लोग बैठे भी थे, तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाया था कि हैंडराइटिंग कुछ और दिखा रही है, और मदर के एक्सपेक्टेशन है उसको IIT में ही डालना है। तो ये जो क्लैशेस आते हैं, आई थिंक मुझे लगता है यहीं पर फिर चाइल्ड आगे जाके बुरी तरह भुगतान करता है अपने करियर का, ठीक है। कि ये बहुत मुझे बुरा लगता है। There is a thin line between फोर्सिंग एंड मोटिवेशन के बीच में एक थिन लाइन है। मोटिवेट योर चाइल्ड, ट्राई टू प्रेजेंट, सी एज अ मदर, ट्राई टू प्रेजेंट ऑल द पॉसिबिलिटीज, नो योर चाइल्ड पोटेंशियल, लाइक यू से स्वॉट एनालिसिस अपने बच्चों का करो। फिर आपको पता है अंदर से आपका बच्चा किस में है ना, किस तरफ किस दिशा में जा रहा है। बट मेरी चाची की बेटी ने डॉक्टर की बनी तो वो क्या सोचेंगे, खानदान वाले क्या सोचेंगे, मेरा नाक कट जाएगा, ये सब चक्कर में अपने बच्चे का एस्पिरेशन और ड्रीम का बलि मत दो। एग्जैक्टली। डोंट डू दैट डिससर्विस बाय फोर्सिंग योर ड्रीम्स ऑन योर चाइल्ड। हाँ, अपने ड्रीम भी ये लोग डालते हैं। योर मोटो शुड बी द चाइल्ड शुड बी हैप्पी। यस, वेरी मच सो, वेरी मच सो। When we talk about the suicidal tendency, can we get reflected into the drawing analysis? जब बच्चे के ड्राइंग में दिखता है वो थॉट प्रोसेस आना, क्योंकि दो अलग चीजें, एक है डिप्रेशन, एक है सुसाइडल टेंडेंसीज की तरफ बढ़ना, और एक सुसाइडल करने के लिए पूरी इच्छा जागृत हो जाना। ऑल बिकॉज जनरली व्हाट वी फील, जब लो फील करते हैं बोलते हैं आज मैं डिप्रेसिव थॉट्स में दिखता हूँ। तो मुझे लगता है यार डिप्रेशन को लोगों ने इतना हाइप बना दिया आजकल, मतलब मैं थक गया हूँ या लो फील कर रहा हूँ, किसी ने इंटरल किया तो मैं उसको, कोई बोलता है तो बोलता है नीरव मैं बहुत डिप्रेशन में, बाद में बात करता हूँ, मुझे यही व्हाट्सएप पे जवाब मिलता है। तो आई थॉट यार या फिर लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं डिप्रेशन क्या है, सुसाइडल टेंडेंसीज क्या है, और सुसाइडल की टेंडेंसी को आगे बढ़कर सुसाइड करने की इच्छा एक अलग है, तीनों एक चीज अलग है। अगेन फ्रेमिंग इनटू वेरी सिंपल टर्म, क्या ड्राइंग एनालिसिस के द्वारा हम उस सुसाइडल टेंडेंसी को या डिप्रेशन को परख पाते हैं हमारे बच्चों की ड्राइंग्स में? इट इज पॉसिबल। Yes. If a child is, if a human is not happy, he is not having a happy frame of mind. You can see the telltale signs in the drawing. Okay. I wouldn't go so far and tell you that I can predict if someone will commit suicide, because suicide is a momentary decision to, not take it further. Of course, all these are mother programs. Okay. Motivation, suicide, divorce, marriage are all mother programming. Okay. Those who don't have स्ट्रॉन्ग जीरो प्रोग्रामिंग ना, इनका सी टू टेक योर लाइफ, ये थॉट माइंड से आता है।
The mind just cannot cope. The mind just cannot cope the pressure it is facing. It prefers to take its life rather than face it, rather than face the next minute. आप सोचो ये सब माइंड में हो रहा है सब कुछ, फिजिकल बॉडी में नहीं. आपको there are extreme cases where some people are suffering from some terminal disease and cannot endure the pain and they take their life. But most of these thoughts come in the mind. So we can see it from the drawing that this person is not happy. Too much shading and the human figure not drawn the way it should be. Left side का देखना वो सब बहुत सारे चीज. We take so many things into consideration. Okay, कोई एक ट्रेट नहीं देख सकते ड्राइंग में. अगर सुसाइडल या डिप्रेशन देखना है तो दैट मीन देयर आर मल्टीपल ट्रेट्स आर देयर. Okay. No. Yeah, because अगर आप सुसाइड बोलो, I consider the father programmer also. कि father programmer का mother strong थी. So he can also be a good support and guide in your life, no? Exactly. तो सब कुछ कंसिडर करना पड़ता है. Okay. जहाँ हमने सुसाइडल टेंडेंसी की ड्राइंग्स में बात की है, बोलो ह्यूमन फिगर, हाउस शेडिंग, ये इस पे रिस्पॉन्सिबल रहता है. So what about the abusement? Now there are also 98 या 2003 में last week I have invited to my friend and my colleague Dr. Raina Khatri. She is a POS trainer. So we were talking about molestation, abusement and POS also. So the same thing can be seen in the drawing and handwriting also कि मेरे बच्चे को कोई अब्यूज कर रहा है या वो परेशान है स्कूल कॉलेज. बिकॉज पेरेंट्स वहाँ सर्वेन जा नहीं सकता, वहाँ कैमरा लग नहीं सकता, वहाँ काउंसलर और टीचर है. ठीक है. तो यहाँ पर ड्राइंग या ग्राफोलॉजी कैसे हेल्प कर सकता है, ये कैसे पता चल सकता है? क्या ये पहली बात तो ये मुमकिन है कि अब्यूजमेंट एंड मोलेस्टेशन कैन बी सीन इन ड्राइंग? Yes. When you do the human figure, when a child has been sexually or physically abused, if you see the lower part is a little ballooned. There are so many other nuances you have to consider. And if you see the human figure, if the eyes are closed, there are many things to consider. Yes, you can see, but I think parents who are really tuned to their child's requirement, the mother is tuned to the child's moods. She didn't see the I'm like not to affect our business per se. बट ये हैंडराइटिंग और ड्राइंग देखने की जरूरत नहीं है. अगर आपके बच्चे को आप मन से रोज देखते हो तो इफ यू आर ट्यून्ड टू योर चाइल्ड्स माइंड एंड मूड, अ स्लाइट change in his temperament, na, you would be alert. So let me see in which area things are not going well. माँ को पहले पता चलता है कि that's why say counseling the mothers is more important than the child. हमेशा पता चलता है. So again, as you told, the depression, suicides, it is, and the marriage, divorce, it is the mother programming. So even the abusement or the molestation is also mother programming, or it is a father programming, or the distortion in mother. See, if the child, if today, understand one thing, I'm not judging the mothers or fathers here. If today someone inappropriately touches me, as a child, and I come and tell it to the mother, the problem will be solved. I'm able to come and tell it to the mother. The problem is solved. I'm not able to come and tell her. Why? Is she absent? Is she not bothered? Or my father also. My father also tries to take action. No? And usually this happens within the family. When the child is suffering sustained abuse, matlab it is happening under their, supervision only. So if I'm not comfortable confiding in my mother, then there is a gap, no? If I'm not able to tell her, or she's not able to understand, or she's not able to accept it, bete don't tell anyone, nahi to khana ka naam kharab ho jayega. Or someone will come to know. They hush the child. This happens in most of the cases. I agree with you. I have seen many of the cases in my friends, in my clients also. और वहां पर मदर ने उस चीज को दबा दिया था, अब्यूसमेंट को, सेक्सुअल मोलेस्टेशन को, कि बेटे मत बताना वरना लोग क्या सोचेंगे कि तेरे चाचा जी ने, मामा जी ने ऐसा किया. एंड दे सप्रेस ऑल दिस एरियाज आल्सो कहीं ना कहीं पे, क्योंकि जब हैंडराइटिंग में इतने लोअर जोन में डिस्टॉर्शन के साथ देखता हूँ, ड्राइंग तो नहीं, हैंडराइटिंग पर ही ज्यादा मैं ध्यान देता हूँ, तब मुझे ये फील होता है. एंड व्हेन आई आस्क द पर्सन फील वेरी शाय टू आंसर कि ऐसा कुछ हो रहा है.
एंड लेटर ऑन आफ्टर द सेकंड थर्ड सेशन दे गेट ओपन अप कि हाँ सर ऐसा हो रहा था, और मैंने बोला पहले किसको आपने बताया, तो दे वर द फर्स्ट पर्सन वाज देयर ओन मदर कि हाँ हमने मम्मी को बोला था, लेकिन मम्मी ने बोला कि ऐसा कुछ है नहीं, ये तेरी गलती है, ये तेरा भ्रम है कि ऐसा कोई तक कर नहीं सकता. आई थिंक समवेयर एल्स द मदर इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस molestation part also. They are not accepting. That's a very great insight, Renuka ji. On okay. Apart from the, because तीन ही पड़ाव मैं मानता हूँ, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप एंड करियर. हमने तीनों पे बात की, लेकिन हाँ हमने करियर पे बात की, हेल्थ पे बात की, एजुकेशन पे बात की, एक लास्ट एरिया बाकी है वो हेल्थ. तो हाउ द ड्राइंग एनालिसिस हेल्प into knowing about the health, or can the health issue can be sorted out in advance or on the current area to the drawing analysis? Yes, if you, I'll give you one, there's very little time. Yeah. If you draw the complete sun. Okay. If you draw the complete sun with its rays and everything, now you possess good health. Okay. Your father possessed good health. Okay. But my ek hi, if you see the sun is not incomplete, with little or no rays and all, you know there is something, some disturbance in your health. Okay. Then you have to address it. I mean, the drawing is not going to point out where exactly, but you know there is a problem. Okay. You acknowledge that and then you address it. Okay. Maybe take care of your diet, or take care of your, if you have, diagnose if you are suffering from something, or there is some deficiency, then you can take a call. Yes. Okay. So in a way I can say सूरज एकदम complete रहना. तो मतलब ये रोगों को इंगित कर सकता है, अगर सामने वाले के माइंड के अंदर में, बॉडी में कुछ बैलेंस नहीं हो रहा है, तो ड्राइंग हेल्प कर सकता है. ये मेरा क्वेश्चन था कि वो हेल्प कर सकता है जरूर है, मे बी इन अ फॉर्म ऑफ. ओके. तो अगर क्योंकि सूरज कंप्लीट रहेगा ना नीरव, सूरज कंप्लीट रहेगा. सूरज व्हेन इट इज कंप्लीट, its rays are going to fall on all the living things on this world, especially the plant world. और plant को कंज्यूम करने वाला एनिमल वर्ल्ड भी खुश रहेगा. तो सूरज का पूरा रहना, चमकना बहुत जरूरी है to sustain life on earth. Exactly. Okay, now I understand कि भाई पूरा सूरज दिखना एक कंप्लीट हेल्थ की निशानी क्यों है. I got it. Yes. So you can take complete action. तो कहीं न कहीं पे ड्राइंग भी हेल्प कर सकता है इसके अंदर में. ये अपने आप में बहुत बड़ा साइंस है ड्राइंग भी. ठीक है. आई रिमेम्बर आई लर्निंग फ्रॉम यू दैट यू आल्सो टोल्ड कि ऐसे स्पेसिफिक रूफ रहती है तो इनके घर के बच्ची भाग के शादी नहीं करती. मैंने आई वाज आल्सो अमेज्ड कि ऐसा भी होता है. तो यस, द पीपल हु आर हियरिंग मी एंड रेणुका जी, देयर इज अ स्पेसिफिक पैटर्न्स आल्सो, जहां लड़कियां अपने फादर का घर छोड़ती नहीं, या फिर अपने से फादर के लोअर स्टेटस में जाके शादी नहीं करती है. तो दैट इज अ वेरी डीपर साइंस. तो इफ समबडी वांट्स टू लर्न, आई एम नॉट अ गुड पर्सन, बट ऑफ कोर्स आवर स्पीकर गेस्ट Renuka Karkera, she is an amazing teacher, not because she is into, but she understands that the teaching very well, and she has been into this drawing and graphology. I think 10 साल से ज्यादा हो गया रेणुका आपको ये फील्ड में, या 12-14 साल हो गए. 2009. हाँ, उन्होंने तकरीबन 10 साल से तो ऊपर हो ही गया है इनको. तो अगर आपको सीखना है तो she is the best mentor who can teach you the drawing analysis. किसी को सीखना है, you can directly DM her, okay, and you can contact her, not to me के सर कैसा क्या है. No, I'm not the person for the, I'm not expert in that area. So I think we have covered, Renuka, all the major aspect of the drawing and what other pain points are come and what can be, how the drawing can help as a human, as a teacher, as a parents also. आज का सेशन तो मेरे हिसाब से बहुत लाजवाब रहा था, और कुछ कॉन्वर्सेशन भी आ रहे हैं. Again, the Krishna is getting interesting conversations. Oh wow! Thank you, Neetu. Thank you, Krishna, for joining us and motivating us to keep on continuing with the sessions also. आपके भी अगर कोई questions हैं, आप drop कर सकते हो comments. Renuka will definitely answer those questions also, even the post session. और अगर आपके कोई personal question है, you can DM her. उनका handle है It's Me Renuka, क्या था मैं भी भूल गया. तो आप देख सकते हो, और इट्स मी रेणुका ऐसा कुछ इनका ये है हैंडल. मैं एग्जैक्टली मैं भी नहीं जानता. You can go into my followers. My students have opened my Instagram account. Okay, नहीं किया वो भी. क्या बात है. So that's amazing. That because you're a lovely teacher, so that's the reason. See the love and affection from your student itself. कि उन्होंने ही बोला कि टीचर हम करके देते हैं.
ठीक है. So thank you very much, जरूर Renuka, for जरूर, yes joining us yes, and giving the insight on the drawing analysis. I hope to have one more session on a different topic with you in our future also. So thank you very much for giving your time. Thank you very definitely. much. It was my absolute pleasure. God bless all of Yeah. you. Best wishes. Yeah. Goodbye. 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 Thank you. Thank you. Bye bye.